So coming to the first chapter, animal tissue or histology. Actually, what is the definition of tissue? What is the definition? As per the NCERT definition क्या है? Group of similar cell or group of dissimilar cells? Actually, similar भी हो सकता है, dissimilar भी हो सकता है. But as per NCERT, we will go a group of similar cells with common origin. So group of similar cell with common origin and having a specific function is called as what? A tissue. तो ये 3 पॉइंट है. पहली बात तो कॉमन ऑरिजिन होना चाहिए, सिमिलर सेल होना चाहिए एंड डूइंग द स्पेसिफिक फंक्शन, देन ओनली इट इज कॉल्ड एज व्हाट? अ टिश्यू. नाउ सेकंड पॉइंट, from which phylum the tissue formation started, and that is what? Cnidaria. It is cell interaction. देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ चीज लिखा हुआ है, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स? एक है सेल, दूसरा है टिश्यू, तीसरा है ऑर्गन ग्रेड एंड फोर्थ इज व्हाट? द ऑर्गन सिस्टम ग्रेड. तो सेल में क्या होगा ना, सबसे लिस्ट डिवीजन ऑफ लेबर एंड सबसे हाईएस्ट किस में होगा? तो ऑर्गन सिस्टम में. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टिश्यू में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है एज पर दी हायरार्की. सेल्स देयर इज ऑलमोस्ट वी कैन सी द लिस्ट डिवीजन ऑफ लेबर, बट ऑर्गन सिस्टम जिनका होता है उनका हाईएस्ट डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है. एंड organ system level of organization start from which phylum? Organ system level of organization starts from which phylum? First का एग्जांपल क्या होगा? Labouriferan. टिश्यू का एग्जांपल क्या होगा? Cnidaria and Ctenophora. Organ grade का एग्जांपल क्या होगा? Platyhelminths. Organ system organization starts from Askelminths. So Askelminths to chordates, it is what? Now organ system level of organization, that is highest division of labor or distribution of labor. Now coming to what are the different type of tissue? Types के अंदर फर्स्ट आ जाएगा कौन सा? एपिथेलियल. नंबर 2 connective tissue. Number 3 muscular tissue. And number 4 nervous tissue. Epithelial का मतलब क्या है? एपी मतलब outer, thelial means what? ना layer. So epithelial means it is mostly covering the external or outer covering of the body. तो इसका main function क्या है epithelial tissue का? ना secretion, absorption, protection, filtration. These are the functions of the epithelial tissue. Connective tissue का function क्या है? That is actually binding tissue. तो binding tissue का mainly function क्या होगा? Now they actually connect or bind the different cells
टिश्यू, ऑर्गन एटसेट्रा। सो सेल्स के साथ सेल्स को, टिश्यू के साथ टिश्यू को, ऑर्गन के साथ ऑर्गन को, मसल्स के साथ बोन, bone to bone, all are actually connected with what? The connective tissue, as we know. And mostly connective tissue का function क्या है? Act as a supporting. तो supportive tissue भी बोल सकते हैं connective tissue को. Third is muscular tissue. Muscular tissue का property क्या है? That is actually contraction and relaxation. And that is reason the why muscular tissue is called as what? ना elastic tissue. क्योंकि ये short and lengthen हो सकता है. And that is why it is functioning what? The movement and locomotion. Movement and locomotion. And nervous tissue में हम लोग आ जाएंगे. It is actually responsive tissue. And responsive tissue होने से function क्या हो जाएगा? ना, that is conduction of impulse. So these are actually the short description of the different type of tissue. So we will start from the epithelial tissue. Elaborate. Just I told you, EP means what? Now that is outer. And thelia means what? A layer. That is why it is called as what? The outer layer tissue, epithelial tissue. What are the characteristics? Number one, cells are compactly arranged. Compactly arranged होगा तो with intercellular space की without intercellular space. So as per NCERT, it should be a very little intercellular space. And that intercellular space is filled with what? क्या होगा? So इसीलिए less matrix होगा कि नहीं? Yes. तो इसीलिए आप लोग इसको बिल्कुल ये मत बोलना है कि मैट्रिक्स absent है. No, matrix is present as because the intercellular space is also little. So मैट्रिक्स का क्वांटिटी भी क्या होगा ना, बहुत ही कम होगा. अब सेकेंड कंसेप्ट, अगर ये कॉम्पैक्टली अरेंज है तो सेल और सेल के बीच में जंक्शंस प्रेजेंट होगा कि नहीं? नहीं होगा. तो विद सेल जंक्शन की विदाउट सेल जंक्शन? विद सेल जंक्शन. अगर डिस्टेंट होगा, देयर इज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, गैप ज्यादा होगा तो जंक्शन कैसे हो सकता है? एब्सेंट होगा. So there is no junction. If the intercellular space is more with more quantity of matrix, then we can say there is no junction. जैसे कि connective tissue में आ जाएगा. Connective tissue में क्या है ना, quantity of matrix is more. That means with junction की without junction between the cells. Without junction. तो आप लोगों को याद रखना है टोटल जो चारों टिश्यू है, इनमें से कौन से टिश्यू में सेल जंक्शन प्रेजेंट है? नंबर 1 तो हो गया एपिथेलियल टिश्यू. नंबर 2 कौन आएगा? और किसमें सेल जंक्शन है? मस्कुलर टिश्यू. तो एब्सेंट किसमें हो गया? कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू में एब्सेंट होता है. बट विथ रेस्पेक्ट टू अगर हम जंक्शन की बात करें, आप लोग जानते हैं कि साइनप्स इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. वन इज इलेक्ट्रिकल साइनप्स, अनदर इज केमिकल साइनप्स. तो इलेक्ट्रिकल साइनप्स अगर है तो दोनों के बीच में गैप जंक्शन प्रेजेंट होगा. अगर ये केमिकल साइनप्स है, देयर इज नो जंक्शन. ठीक है, तो याद रहेगा कि इलेक्ट्रिकल साइनप्स विथ व्हाट ना, गैप जंक्शन. जो आपके बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा साइनप्स प्रेजेंट है? केमिकल साइनप्स की इलेक्ट्रिकल साइनप्स? केमिकल साइनप्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम all the three ganglia. It is derived from all the three ganglia. That means ectoderm, mesoderm and endoderm. तीनों से एपिथेलियल टिश्यू बनता है. कनेक्टिव टिश्यू का डेरिवेटिव क्या होगा?
ना मेसोडर्म। मस्कुलर टिश्यू क्या होगा? मेसोडर्म। नर्वस टिश्यू क्या होगा? एक्टोडर्म। याद रहेगा। And epithelial tissue is found from all the three germ layer: ectoderm, mesoderm, as well as endoderm. Third, next point is, it is avascular ki vascular? Means without blood supply. Then the question is, how from and how come the nutrient or any kind of your substance is to be supplied to the epithelial tissue? By means of what? The basement membrane. तो यहाँ पे basement membrane क्या करता है ना, दो स्ट्रक्चर के बीच में मिडिल मैन का काम करता है। एक हो गया एपिथेलियल टिश्यू, नीचे हो गया ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच में कौन है? बेसमेंट membrane। हम बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट लाइन्स the external and also internal covering of different organs. That also lines the external covering as well as internal covering of the different type of organs. Especially I'm taking about the visceral organs. Visceral organ का मतलब क्या होता है? The innerly located all the soft organ present in your body is called as what? Visceral organ. तो visceral organ को ये क्या करते हैं? Externally cover किया है, lines किया है, so that will protect them. Next, lowermost layer rest on basement membrane. Basement membrane is a cellular layer की non-cellular layer. Means what is actually the composition of basement membrane? Basement membrane है क्या? अगर ये सेल से नहीं बना तो किससे बना है? It is actually the cell product. So non-cellular formed of cell product. हम बात करेंगे अभी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है विद इन मिनट। नेक्स्ट इज द फ्री सरफेस मे बी विथ cilia, मे बी विथ microvilli। अगर सिलिया प्रेजेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे ना, सिलिएटेड एपिथेलियम। अगर माइक्रोविली प्रेजेंट रहेगा तो क्या बोलेंगे? ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियम, है कि नहीं? सो इट मे बी फ्री, मतलब स्मूथ भी हो सकता है, विथ सिलिया भी हो सकता है, विथ माइक्रोविली भी हो सकता है। सो वी विल डिस्कस। एंड द लास्ट पॉइंट, इट इज मे बी formed of one or many layer। अगर ये वन लेयर हुआ तो क्या बोलेंगे? यूनिलेमिनर की मल्टीलेमिनर, मतलब सिंपल एपिथेलियम। अगर इसमें मोर देन वन लेयर रहेगा तो क्या बोलेंगे? मल्टीलेमिनर और कंपाउंड एपिथेलियम। कंप्लीट है? कंफर्म करिए, कंप्लीट है? यस। Coming to the basement membrane. Try to understand. Supposed to be
This is actually epithelial cells, for example. उसके नीचे क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है. As we can see, here the basement membrane is formed of two layers. This is actually basement membrane. Basement membrane is formed of how many layers? Two layers. ये क्या है? बाहर की तरफ है कि नहीं? ठीक है, because it is epithelial tissue, so it is outer, and this is what the inner. Now, the outer layer is called as what? The basal lamina. And the inner layer is called as what? The fibrous lamina. तो यहाँ पे क्या होगा? Inner to the fibrous layer, it is what? क्या होगा? Connective tissue होगा. Connective tissue तो vascular होता है ना? Means यहाँ पे blood supply present होगा. Now the point is, basal lamina is close to epithelium ki close to connective tissue. So basal lamina must be formed of the product of which epithelium? Epithelial tissue का ही product होगा. But fibrous lamina किसका product होगा? ये है point. ठीक? So basement membrane, one is basal lamina. This is outer. And formed of mucopolysaccharide, and glycoprotein. Is formed of mucopolysaccharide and glycoprotein secreted by epithelial tissue. Whereas fibrous lamina it is actually inner and formed of collagen or reticular fiber. एंड आप लोग पढ़े हैं कि कोलाजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, फाइबर किसका होता है? कनेक्टिव टिश्यू है कि नहीं? So that is why fibrous lamina, which is formed of collagen or reticular fiber, secreted by connective tissue. And it's supposed to be the epithelial tissue is multi-layer. मैंने यहाँ पे simple epithelium दिखाया, only one layer. But अगर multi-layer हुआ तो सिर्फ और सिर्फ lower most layer क्या होगा? Now that will be rest on basement membrane. ठीक है? And that to be which layer of the basement membrane? ना basal lamina. Clear है? This is all about the basement membrane. Complete है? Now we are coming to the different type of epithelial tissue. Directly आते हैं उसके classification. Epithelium simple epithelium and compound. Simple का character क्या होगा? Single layer, and that is why it is also called as what? The unilateral. I will write one by one. Simple epithelium के अंदर mainly three different type of epitheliums are coming: squamous, cuboidal, columnar. Mainly
मैं इन तीनों को छोड़ के और भी डिस्कशन करूंगा, बहुत सारा अलग अलग टाइप का सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट है। कंपाउंड एपिथेलियम इज ऑफ टू डिफरेंट यूज। वन इज व्हाट ना स्ट्रेटिफाइड, another is what transitional. Stratified, another is transitional. Stratified का भी बहुत सारे टाइप्स है, स्पेशली stratified squamous, second is stratified cuboidal, third is stratified columnar, these are the three different type of stratified: stratified squamous, stratified cuboidal and stratified columnar. One by one हम लोग डिस्कशन करेंगे. So we are coming to the first, that is simple epithelium. Simple epithelium, as already told, it is formed of single layer of cell, and that is why it is called as what na unilaminar. Under the simple epithelium, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्क्वामस. Among from the squamous, cuboidal and columnar, which is the simplest epithelium? Why the squamous is simplest epithelium? Now it is very thin, very tightly or compactly arranged. So what should be the location of this squamous and what should be the function of squamous epithelium? आपको ध्यान देना है क्योंकि ये सिंपलेस्ट है. तो ऐसे जगह पे रहना चाहिए, ऐसे जगह पे होना चाहिए जहां पे मेम्ब्रेन बहुत ही पतला होना चाहिए, जहां पे फिल्ट्रेशन एंड एक्सचेंज करने में उनको इफेक्टिव. तो कहां पे प्रेजेंट होगा? एल्वियोली में होगा, बोमेन्स कैप्सूल में होगा, ब्लड वेसल्स में होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? मेनली ये तीन को याद रखना है एज पर एनसीईआरटी. सो इट इज द सिंपलेस्ट epithelium. Flat cells. Flat cells है which appears like what na tiles on the floor. And that is the reason why the simplest epithelium, that is squamous epithelium, it is also called as what? Pavement or tessellated epithelium. So pavement epithelium or tessellated epithelium, that is the reason why, as the cells are very flat and looks like the tiles on the floor. मैं diagrammatically आपको explain कर देता हूँ. किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा समझने में, लिखने में, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो हो सकता है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे. टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं. This is actually squamous epithelium. ये साइड व्यू है, दिस अपर व्यू.
अब साइड व्यू में देखिए जो न्यूक्लियस है सेंट्रिक एंड ओवल, राइट। लेकिन अगर आप अपर व्यू में देखेंगे न्यूक्लियस को, कैसे दिखेगा आपको? सेंट्रिक एंड राउंडेड। As you can see very clearly, very thin layer they are forming. अगर फ्रंट व्यू देखें तो ये पूरा कैसे दिख रहा है आपको? फ्लैट सेल्स, जस्ट like your tiles on the floor. That is the reason why it is called as pavement or tessellated epithelium. ठीक है, नीचे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा, हर जगह कंपलसरी है, बस ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, ठीक है, बाकी सब में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। अब होते हैं लोकेशन में आते हैं। लोकेशन में एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, शायद आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि ब्लड वेसल्स का एक्चुअली 3 अलग अलग लेयर होता है। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्यूनिका और थेका एक्सटर्ना। मिडिल इज कॉल्ड एज व्हाट? ना मीडिया। एंड इनर इज कॉल्ड एज इंटरना। इंटरना का भी 2 लेयर है। इंटरना के भी क्या है? 2 लेयर है। पूरा जो इनर है उसका नाम है एंडोथेलियम, एंड एंडोथेलियम से जस्ट बाहर क्या होगा? इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम टुगेदर टू फॉर्म व्हाट? ट्यूनिका इंटीमा और इंटरना। एंड एंडोथेलियम इज मेड अप ऑफ व्हाट? स्क्वामोस। ट्यूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ व्हाट? muscles. Which muscles? Smooth muscles. And tunica externa is made up of what? Connective tissue. हम लोग पढ़ेंगे vascular chapter में। So endothelium of blood vessel. Next है alveoli. Next है Bowman's capsule. Next है peritoneum. पेरिटोनियम को आप लोग जानते हो पॉपुलरली सेलोमिक एपिथेलियम। पेरिटोनियम दैट इज सेलोमिक एपिथेलियम। It is also present in the loop of Henle. Loop of Henle में भी squamous epithelium present है। फंक्शन क्या हो जाएगा? एक्सचेंज, फिल्ट्रेशन। कंप्लीट है? कंफर्म करिए जल्दी जल्दी। सेवन एक्सप्रेस we are coming to the number 2, cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium as it is cube like cells. It is actually cube like cells, so it is called as cuboidal epithelium. Centric and rounded nucleus. Centric and rounded nucleus. इसका जो लोकेशन होगा प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक डक्ट, सैलिवरी डक्ट,
गैस्ट्रिक डक्ट भी होगा, थायराइड फॉलिकल भी होगा, क्यूबिडल एपिथेलियम का डायग्राम कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है, क्यूब-लाइक सेल्स विथ सेंट्रिक न्यूक्लियस, राउंडेड न्यूक्लियस। नेक्स्ट नंबर 3, मैं डिटेल्स में जाऊंगा फिर से कि क्यूबिडल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन, जैसे कि सिलेटेड क्यूबिडल होगा, फ्रेश-बोर्डेड क्यूबिडल होगा, जर्मिनल क्यूबिडल होगा, पिगमेंटेड क्यूबिडल होगा, मॉडिफिकेशन है। लेट मी फिनिश फर्स्ट। नंबर 3, कलमनर एपिथेलियम। कलमनर एपिथेलियम कॉलम और पिलर लाइक सेल। यहाँ पे न्यूक्लियस इज ओवल and present towards base. It is not present in the center, although it is present towards base. Like this. You get basement membrane, and the cells are pillar-like or column-like cell. That is why it is called as columnar. Nucleus is present towards base, oval set. Location क्या होगा? कलमनर एपिथेलियल सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टमक में होता है। और कहाँ होता है? कहाँ पे होगा? गॉल ब्लैडर, यूटेरस, जीआई ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक सब आ जाएगा कि नहीं? नाउ कमिंग टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द क्यूबिडल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द कलमनर। उसके अंदर फर्स्ट आते हैं सिलिएटेड। सिलिएटेड मे बी क्यूबिडल और मे बी कलमनर। सिलिएटेड दो वैरायटी है, या तो क्यूबिडल भी हो सकता है या तो कलमनर हो सकता है विथ सिलिया। This is actually ciliated columnar and this is ciliated cubital. The point of origin of cilia is called as what? Point of origin of cilia is called as what? जिस पॉइंट से सिलिया ओरिजिन हुआ है उसका नाम क्या है? बेसल बॉडी। नाम नहीं सुने? Point of origin of cilia is called as basal body. This is actually ciliated columnar and ciliated cubital. अब आप लोग को बताना है कि सिलेटेड क्यूबिडल कहाँ पे प्रेजेंट होगा एंड सिलेटेड कलमनर कहाँ पे प्रेजेंट, बताइए। सिलेटेड क्यूबिडल कहाँ पे प्रेजेंट? देखिए फर्स्ट आपको ये समझना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिया। सिलिया क्या है? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, तो ये मूवमेंट करेगा and victim of this cilia that will move the particle over it. So what should be the location of cilia? कहाँ पे होना चाहिए? जहाँ पे कंडक्शन हो। ट्रैकिया में, ब्रोंकियल्स, फैलोपियन ट्यूब हो सकता है, बट स्पेसिफिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? सिलिएटेड क्यूबिडल, देन सिलिएटेड कलमनर, और एक है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड भी है।
तो 3 अलग अलग टाइप का टिश्यू, इसलिए लोकेशन भी स्पेसिफिक होना चाहिए. So what should be the location of the ciliated cubital? Now it is present where the dust particle, that is different type of bacteria virus which is entering into the respiratory tract through the air, that should be expelled out. And that is why the ciliated cubital is present in the smaller bronchioles and also the part of nephron. Smaller bronchioles and part of nephron. तो smaller bronchioles में इसका function क्या होगा? Now that will expel the dust particle. That will expel the dust particles. That is from the, that is air जो respiratory tract के through entry करता है, pass करता है. That should be expelled out. And nephron में इसका function क्या है ना? That will conduct what ना nephric filtrate. Nephric filtrate को pass कराने के लिए भी ciliated चाहिए कि नहीं? And that is present in the nephron. What is the location of ciliated columnar? बोलिए. Fallopian tube. और कहाँ पे हो सकता है? Fallopian tube में इसका function क्या है ना? Conduction of ovum. अगर fertilization हो गया है तो conduction of zygote. And what is the other location of ciliated columnar? Location क्या है? Central canal of spinal cord. Brain ventricle. पढ़े हो कि नहीं? First, second ventricle, third ventricle, fourth ventricle. There are 4 different type of ventricle present in the brain. And what is the common between the central canal of spinal cord and brain ventricle? And that is filled with CSF. So what is the function of columnar ciliated epithelium present in the central canal and brain ventricle? And that is conduction of CSF, cerebrospinal fluid. And what is the function in the fallopian tube? The conduction of the ovum or zygote. ये था ciliated. अभी हम नेक्स्ट में आते हैं. Brass-bodied. Brass-bodied with microvilli. And microvilli क्या करता है? Increase the surface area. And increase surface area करने से क्या होगा? Absorption करेगा. This is the brass-bodied columnar. And this is the brass-bodied cubital. Basement membrane as usual present तो रहेगा. So because of the finger-like projections present over the surface of the cells, that looks like finger-like structure which increase the surface area for the effective absorption, called as microvilli. Here, just like the ciliated, here also brass-bodied का भी 2 variety है. Brass-bodied cubital and brass-bodied columnar. बताइए brass-bodied cubital कहाँ पे प्रेजेंट होगा एंड brass-bodied columnar कहाँ पे प्रेजेंट है? DCT और GCT और निपुट. DCT में क्यों रहेगा? DCT में तुम लोगों का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या कंपल्सरी एब्जॉर्प्शन होता है कि फैकल्टेटिव होता है? फैकल्टेटिव होता है. ठीक है, इसीलिए जो कंपल्सरी एब्जॉर्प्शन है दैट नीड टू बी प्रेजेंस ऑफ व्हाट ना ब्रश-बॉडेड. इसलिए वो सिर्फ पीसीटी में होता है, डीसीटी में नहीं होता है. डीसीटी के बारे में उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो कंसेप्ट है मैं बताऊंगा कि वहां पे क्यों नहीं होता है. सो दिस इज पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन. So absorption of what? Nephric filtrate.
ब्रासबोर्डेड कलमनर कहाँ पे होगा? ब्रासबोर्डेड कलमनर कहाँ पे होगा? बोलिए फटाफट। इंटेस्टिनल म्यूकोसा एंड gastric mucosa. Means it is present in the small intestine and stomach. Mostly we can say what? Not present in the small intestine. And small intestine में ये क्या absorb करता है? ना food absorption करता है. Now next आते हैं. आप लोग पढ़े होंगे एक वर्ड है ब्रासबोर्डेड एंजाइम. पढ़े हो क्या? Yes or no? What is the meaning of ब्रासबोर्डेड एंजाइम? थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना. ब्रासबोर्डेड एंजाइम किसको बोलते हैं? The enzyme secreted from the brasboded cells. And brasboded cells mainly कहाँ present है? Intestines. So फिर which enzymes are called as brasboded enzymes? Yes. The enzymes present in the succus centricus or intestinal juice. Intestinal enzyme which are called as brasboded enzyme. हम लोग पढ़ेंगे digestion chapter में कि list of intestinal enzyme present in the succus centricus. So next we are coming to pigmented. पिगमेंटेड एपिथेलियम में ये सिर्फ और सिर्फ क्यूबोइडल होगा. नो कॉलमनर, ओनली क्यूबोइडल. This is actually supposed to be the cuboidal cells with melanin pigment. यहाँ पे melanin pigment होगा. That is why it is looks like what? Not dark tissue. This is melanin. अब बताइए ये ब्रासबोर्डेड सॉरी पिगमेंटेड क्यूबोइडल कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वेरी गुड. Choroid of eye and helps in the absorption of what? Light. अगर लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आप लोग को दिखेगा कैसे? अगर रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो आपको नहीं दिखाई देगा. सो बैकग्राउंड शुड बी डार्क और बैकग्राउंड शुड बी व्हाइट. आई का जो बैकग्राउंड है, लाइट जो एंट्री कर रहा है, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? डार्क होना चाहिए. सो दैट द लाइट विल बी एब्जॉर्ब. अदरवाइज द लाइट विल बी रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो हम लोग को दिखाई नहीं देगा. तो इसीलिए जो कोरॉइड है, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? क्यूबोइडल पिगमेंटेड विथ मेलानिन पिगमेंट. नेक्स्ट germinal. Germinal also formed of only cuboidal. And present कहाँ पे? सब जानते हैं, बोलिए. Is present in seminiferous tubules and ovary. Seminiferous tubules of testes and lining of ovary. And that is function क्या है इसका? Gametogenesis. Gametogenesis in the testis is called as spermatogenesis, and in the ovary it is called as oogenesis. तो जर्मिनल एपिथेलियम तो पढ़े हैं. वो कौन सा एपिथेलियम है? ना क्यूबोइड. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू ग्लैंडुलर. कंप्लीट है सबका?
Glandular, again two different type. Glandular cuboidal and also glandular columnar. पूरा एनसीईआरटी का पूरा क्लियर कट लाइन है कि बोथ क्यूबिडल एंड कलमनर फॉर्म द ग्लैंडुलर एपिथेलियम. हम लोग इतना जानते हैं कि भाई कलमनर जो है वो ग्लैंडुलर होता है स्पेसिफिकली, यस और नो, लेकिन क्यूबिडल भी होता है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चंस रहेगा एनसीईआरटी में स्लाइड रहेंगे कि बोथ क्यूबिडल एंड कलमनर दे फॉर्म द ग्लैंडुलर टिश्यू. And these are present in intestinal and gastric mucus. फंक्शन क्या है इंटेस्टिनल म्यूकस एंड गैस्ट्रिक म्यूकस में? ये ग्लैंडुलर क्यों प्रेजेंट? एंड ग्लैंडुलर मोस्टली दे सीक्रेट व्हाट? Secrete what? Mucus. So mucus, what is the need of secretion in the intestinal and gastric mucosa? As it is secreting the mucosa, so called as mucosa. So what is the function of the secretion of the mucus in the gastric and the intestinal? Number one, एक तो फूड को लुब्रिकेट करना है. अगर फूड लुब्रिकेट नहीं होगा तो पेरिस्टालसिस कैसे होगा? इसीलिए पहली बात तो लुब्रिकेशन करना है. सेकेंड पॉइंट क्या है? They need to protect the intestinal wall and gastric wall from the self digestion of enzyme. आपको पता है कि एंजाइम का काम होता है always to digest the specific like your carbohydrate, like your protein, like your lipid or fat. अगर ये एंजाइम डायरेक्टली स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में डायरेक्टली अगर ये कांटेक्ट हो जाता है तो वो खुद उसका जो टिश्यू है, जो सेल्स है, उसी को डैमेज करेगा. एंड दैट इज व्हाई हम लोग पता है अगर एक्सेस गैस्ट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है इन द स्टमक, दैट लीड्स टू व्हाट ना, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और गैस्ट्राइटिस. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए म्यूकस बहुत जरूरी है ताकि वो प्रोटेक्शन दे. सो इट इज फर्स्ट इज लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन. कंप्लीट हो गया. Coming to the next phase. The next is pseudostratified. Pseudostratified. It actually formed of columnar epithelial cells, looks like double layer, but actually क्या है? सिंगल लेयर. तो ये ट्रूली डबल लेयर है कि ट्रूली फॉल्स लेयर है? ऐसे फॉल्सली डबल लेयर क्या होगा? इट इज फॉल्सली डबल लेयर, बट ट्रूली क्या है? सिंगल. सो इट इज व्हाट? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि दैट इज कम्स अंडर व्हाट ना, कंपाउंड. एंड कंपाउंड होता है मल्टी लेयर. तो स्ट्रेटी मतलब क्या? स्ट्रेटा मतलब लेयर. स्ट्रेटा मतलब क्या है? लेयर. सो मोर देन वन लेयर, देन इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड. बट इट एक्चुअली more than one layer looks to be, but actually it is single layer. Why is it so? ना, because of the two different type of cells. थोड़ा सा लंबा वाला cells भी, थोड़ा सा short वाला cells भी. That is why they actually looks like double layer. Let's see the diagram.
Here actually the cells are two different types. This is long cell and this is short cell. लॉन्ग सेल एंड शॉर्ट सेल का न्यूक्लियस भी दो अलग अलग पोजीशन में है कि सेम पोजीशन में है? न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन तो न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन different position. That is why it looks like what a double layer. And actually ये single layer इसीलिए है क्योंकि short cell and long cell both are present on the basement membrane. That is why actually single layer. And long cell may be with what? ना gland भी हो सकता है और may be with what ना cilia. So this is actually the structure of ciliated pseudo-stratified ki non-ciliated pseudo-stratified. It is actually ciliated pseudo-stratified. Pseudo-stratified actually two different types. One is ciliated, another is non-ciliated. Ciliated में क्या होगा ना both cilia and goblet cell. This is actually goblet cell. Cells which are gob-like structure and secreting what? Mucus are called as goblet cells. तो cilia and goblet cell both होगा and non-ciliated में क्या होगा ना only goblet cell. cilia यहाँ पे absent हो तो फिर ciliated pseudo-stratified कंडक्शन का भी काम करेगा प्लस म्यूकस भी सिक्रेट करेगा लेकिन जो नॉन सिलिएटेड है वो सिर्फ म्यूकस सिक्रेट करेगा नो सिलिया राइट लोकेशन इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है pseudo stratified ciliated epithelium present in what na trachea large bronchi and nasal chamber फंक्शन आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेनली इट इज प्रेजेंट इन द व्हाट ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नेजल चैम्बर लार्ज ब्रोंकाई ट्रैकिया तो उसका फंक्शन क्या है ना एक तो डस्ट पार्टिकल होगा तो उसको एक्सपेल करेगा बाय मींस ऑफ बीटिंग ऑफ सिलिया एंड अगर कोई भी हार्मफुल एजेंट होगा बैक्टीरिया वायरस एटसेट्रा उसको म्यूकस के थ्रू क्या करेगा ट्रैप कर लेगा क्लियर है सो दैट द एयर व्हिच इज रीचिंग द एक्चुअली व्हाट ना एल्वियोली विल बी क्लीन एंड क्लियर एयर आप कभी सोचे हो कि हम लोग जो एयर इनहेल करते हैं वो एल्वियोली तक कैसे इतना फ्रेश पहुंचता है ना बिकॉज ऑफ दिस नहीं तो सोचिए ना एल्वियोली हम लोग का ब्लॉक हो जाता बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल एक्युमुलेशन रेगुलर बेसिस नॉन सिलिएटेड इट इज प्रेजेंट इन मेल यूरेथ्रा is present in male urethra and salivary gland भी लिख सकते हैं which is the large salivary gland पैरोटिड salivary gland में प्रेजेंट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं पैरोटिड so this is all about the simple epithelium जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारा टाइप्स बता दिया squamous cuboidal columnar and modified cuboidal modified columnar now we will start the second one compound epithelium
कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीलेयर और multilaminar as it is formed of more than one layer, many layer. That is why it is called as multi-layered or multilaminar. Limited role in secretion and absorption. मेन सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन किसका रोल था? सिंपल एपिथेलियम का. तो इसका क्या होगा ना, लिमिटेड रोल. ये एनसीईआरटी का लाइन है, लिमिटेड रोल इन द सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन. तो मेन रोल क्या है? तो मेनली प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव नेचर. So mainly role in protection. So it is present in the wear and tear area. What is the meaning of wear and tear area? क्या है इसका मतलब? हाँ, the area which is exposed to injury is called as what? Wear and tear. आप सोचिए ना, आपका बॉडी का जो पार्ट ज्यादा इंजुरी होने का चांसेस है, वो अगर सिंपल एपिथेलियम से बनता है तो प्रॉब्लम होता है कि नहीं? अगर सिंपल एपिथेलियम से अगर स्किन आपका फॉर्म होता तो इंजरी होगा तो पूरा का पूरा एंटायर टिश्यू क्या होता है ना, लॉस हो जाता. रीजेनरेट होने के लिए कुछ बचता ही नहीं. इसीलिए जो भी आपका एक्सपोज टू इंजरी है, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? मेनी लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू कंपाउंड. सो दैट अगर डैमेज भी होता है तो 2 to 3 लेयर लॉस हो जाएगा, लेकिन लास्ट लेयर तो प्रेजेंट रहेगा ना. एंड दैट लास्ट लेयर विल फॉर्म द न्यू सेल्स टू रिप्लेस द डैमेज्ड. तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है. छोटा सा क्वेश्चन ये है कि विच लेयर इज कॉल्ड एज विद द जर्मिनल प्रॉपर्टी. जर्मिनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? द लेयर और द प्रॉपर्टी टू हैव व्हाट? द रीजनरेशन पावर इज कॉल्ड एज व्हाट ना? जर्मिनल नेचर. तो विच लेयर हैविंग द जर्मिनल प्रॉपर्टी? अपर मोस्ट लेयर कि लोअर मोस्ट लेयर? क्योंकि अपर मोस्ट लेयर अगर डैमेज हो जाता है तो हु विल रिप्लेस देम? ना लोअर मोस्ट. दैट इज व्हाई द लोअर मोस्ट एपिथेलियल टिश्यू, द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द कंपाउंड एपिथेलियम इज कॉल्ड एज स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम. स्ट्रैटम मतलब क्या है? लेयर. जर्मिनल नेचर प्रेजेंट है, इसीलिए उस लेयर का नाम क्या है? स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम. कौन क्या पूछ रहा था? इसीलिए वेट करो. हम लोग इसका कंपाउंड एपिथेलियम का टाइप्स में आते हैं. पहले आते हैं स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम thicker and non-stretchable. Thicker and non-stretchable. And यहाँ पे जो लोअर मोस्ट सेल्स होगा, लोअर मोस्ट लेयर प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ कलमना. जो मिडिल लेयर होता है middle 2 to 3 layer which is formed of polygonal cells. And the uppermost is made up of either squamous or cuboidal
और कलम। इसीलिए मैंने लिखा था, जहां पे हम लोग क्लासिफाई किए थे कनेक्टिव टिश्यू को, मैंने लिखा था कि स्ट्रेटिफाइड का 3 अलग अलग टाइप, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबिटल एंड स्ट्रेटिफाइड on the basis of what? Now, on the basis of type of cell present on which layer? Uppermost. क्योंकि इनर मोस्ट और लोअर मोस्ट हमेशा कलमनर होगा, मिडिल में जो 2 to 3 लेयर होगा वो हमेशा पॉलीगोनल होगा, लेकिन फ्लक्चुएट किसका कर रहा है, चेंज किसका हो रहा है ना, अपर मोस्ट। अपर मोस्ट में अगर स्क्वामस है तो देन दैट स्ट्रेटिफाइड इज कॉल्ड एज व्हाट ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। इफ इट इज क्यूबिटल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबिटल। इफ इट इज कलमनर, स्ट्रेटिफाइड कलमनर। लेट्स हैव द डायग्राम फर्स्ट। देखो मैंने यहाँ पे आउट इनर मोस्ट पहले किया, लोअर मोस्ट पहले किया, सो इट इज कलम एंड दैट विल बी रेस्ट ऑन व्हाट, बेसमेंट। मिडिल में यहाँ पे 2 to 3 सेल्स लेयर प्रेजेंट रहेगा एंड विच आर एक्चुअली पॉलीगोनल सेल्स। एंड यहाँ पे मैं डायग्राम में आपको अपर मोस्ट लेयर स्क्वामस दिखा रहा हूँ। तो न्यूक्लियस विल बी व्हाट, क्या होगा स्क्वामस का, ओवल सेट। देखा, तो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। This is the lowermost, called as what, stratum, क्या होगा, germinativum, stratum germinativum, as they contain what na, germinal property or germinal nature, which replace the damaged cells during injury. That is why it is called germinal property, called as stratum germinativum. मिडिल में मैंने आपको बताया था 2 to 3 layers present होगा, that is made of polygonal cells, मैंने ऊपर लिख दिया डायरेक्टली, and here it is the uppermost layer, and as per the diagram here मैंने यहाँ पे क्या दिया है ना, स्क्वामस। ये क्यूबिडल भी हो सकता है, कलमनर भी हो सकता है, accordingly the tissue will be changed. अब यहाँ पे मैं एक एडिशनल स्ट्रक्चर ऐड कर रहा हूँ, and that is what ना supposed to be, मैंने यहाँ पे केराटिन ऐड कर दिया। तो केराटिन इज व्हाट, वाटर परमिएबल और वाटर इम्परमिएबल, इम्परमिएबल। अगर मैं यहाँ पे केराटिन ऐड किया, then this stratified squamous will be called as what, next keratinized। अगर मैं यहाँ पे केराटिन हटा देता हूं तो क्या बन जाएगा ना, नॉन केराटिनाइज्ड। दैट इज व्हाई द डायग्राम इज स्पेसिफिकली स्ट्रेटिफाइड keratinized squamous। and keratin, हम लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, केराटिन स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ विच प्रोटीन, कोई बोल पाएगा? केराटिन तो प्रोटीन है, स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, विच प्रोटीन केराटिन बिलोंग्स टू? सेकेंडरी में 3 अलग अलग टाइप आता है,
सेकेंडरी में भी 3 अलग अलग टाइप आता है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड, कोलाजन हेलिक्स। तो विच इज द केराटिन? अल्फा हेलिक्स, दैट इज व्हाई केराटिन इज कॉल्ड एज अल्फा केराटिन। ठीक है, एंड दिस केराटिन water impermeable, water impermeable scleroprotein। Scleroprotein मतलब dry protein, that will make the surface what? That will make the surface dry। अब बताइए स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस प्रेजेंट कहां पे होगा? केराटिनाइज्ड कहां पे होगा? नॉन केराटिनाइज्ड कहां पे होगा? केराटिनाइज्ड है मतलब ड्राई सरफेस, नॉन केराटिनाइज्ड मतलब मॉइस्ट। केराटिन एब्सेंट होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? मॉइस्ट। अब आपको दिमाग क्या लगाना है कि ऐसा जगह जहां पे इंजरी होने का भी चांस ज्यादा है क्योंकि कंपाउंड है, प्लस दैट इज ड्राई और इट इज मॉइस्ट। बोलिए स्किन होगा, तो स्किन ऑफ टेट्रापोडा। टेट्रापोड मीन्स एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमेलिया। चारों को आप सोचिए, ड्राई स्किन है कि मॉइस्ट स्किन है? एम्फीबियंस में मॉइस्ट भी होता है, ड्राई भी होता है। ड्राई भी है एम्फीबियंस। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? ना टेट्रापोड स्किन। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज में चले, यस और नो? कंजूसी क्यों कर रहे हो? बोलो ना यस। हाँ, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, उसमें केराटिनाइज्ड present in the skin of tetrapoda, nail, hooves, horn, feather, hair, etc. ये सब ड्राई है कि मॉइस्ट? समझ में आएगी? अगर हम लोग नॉन केराटिनाइज्ड की बात करें, बहुत बढ़िया, बकल का वीडियो। और सोचिए, थोड़ा सा सोचेंगे तो ब्रेन आपका डेवलप होगा ज्यादा। हाँ, इसोफेगस होगा, इसोफेगस हो गया, बकल कैविटी हो गया, कॉर्निया हो जाएगा, एनल कैनल, कौन सा? नहीं, नेजल में अलग चीज आ जाएगा। ये हो जाएगा मॉइस्ट। एक्चुअली क्या है कि नेजल चैम्बर में खाली मॉइस्ट सरफेस तो होने से नहीं होगा ना, नेजल चैम्बर पे और क्या फंक्शन होता है? फिल्ट्रेशन भी होता है, क्योंकि जो डस्ट एंट्री कर रहा है वो उसको फिल्ट्रेट भी चाहिए। और क्या होना चाहिए? दैट दैट एयर मस्ट बी सिमिलर टू द बॉडी टेम्परेचर। जो एयर आप इनहेल कर रहे हैं, हम लोग एसी रूम में बैठे हुए तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है, गर्मी में जाएंगे
बाहर जाएंगे तो टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना। तो आप सोचिए आपका हॉट एयर और कूल एयर अगर कोई भी आपके बॉडी में एंट्री करता है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। एंड उसको मेंटेन करने के लिए फिर से आपको एनर्जी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। एंड दैट इज बाय नेजल चैम्बर का एडिशनल फंक्शन है टू मेक द एयर टेम्परेचर सिमिलर टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। नंबर 3 क्या है ना, हम लोग नेजल चैम्बर में स्मेल भी डिटेक्ट करते हैं। इसीलिए खाली नेजल चैम्बर में खाली ऐसे बोल देंगे कि ये मॉइस्ट है, नहीं। 3 अलग अलग फंक्शन है, इसीलिए अलग अलग टिश्यू वहां पे प्रेजेंट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर में। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडल। स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडल में अपर मोस्ट लेयर क्या होगा, क्यूबिडल होगा कि नहीं। एंड दैट इज प्रेजेंट इन द स्वेट ग्लैंड डक्ट, mammary gland duct, parotid duct and pancreatic duct. Mammary gland duct and also conjunctiva. कोई बता पाएगा what is the scientific name for the sweat gland? Sudorific gland. Sebaceous gland is the other name of oil gland. आपको मैंने पूछा क्या, एग्जाम हॉल में आप लोग क्यों गलती करते हैं, समझ में आ रहा है क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? लिप्स में। हाँ, इतना गहरा सोच तुम्हारे दिमाग में आता कैसे? हाँ, तो फिर हम क्या बात कर रहे थे, साइंटिफिक नेम ऑफ स्वेट ग्लैंड इज कॉल्ड एज व्हाट, सुडोरोफिक ग्लैंड, एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑयल ग्लैंड इज कॉल्ड एज व्हाट, सेबेसियस ग्लैंड। एग्जाम हॉल में आप लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा सोचते हो, इतना ज्यादा सोचते हो कि जैसे लगता है कि हम सिविल सर्विस का एग्जाम देने गए हैं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इतना ज्यादा सोचते हैं। देखो बैठ के कोने में सोच रहा है, लिप्स। इसी वजह से तो आप लोग का एग्जाम खराब होता है, बहुत ज्यादा सोच देते हो। क्यों भाई, सिंपल सोचो, आंसर भी बहुत सिंपल है। आप लोग मिस्टेक इसीलिए करते हो क्योंकि आप लोगों का सोच अलग डायरेक्शन में जाता है, जो सोचना चाहिए वो लोग वो सोचते नहीं हो, दूसरा सोच लेते हो। इसीलिए माइनर मिस्टेक, सिंपल मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक होता रहता है। क्वेश्चन को पहले सुनो, क्वेश्चन को पहले समझो, फिर आंसर दो। मैंने पूछा आपको स्वेट, आपका दिमाग तक क्या जा रहा है ना, ऑयल ग्लैंड। मैंने आपको पूछा कि एब्डोमेन इज मेड अप ऑफ विच मसल, क्या होगा आंसर? एब्डोमेन इज मेड अप ऑफ व्हाट, स्मूथ मसल्स। देखो कैसे आप लोग का तो ब्रेन, देखो सुपर हाई ब्रेन कैसे सोचो। मैंने आपको पूछा एब्डोमेन, आप दिमाग को क्या, दिमाग आपका कैप्चर क्या किया ना, स्टोमक। मैंने पूछा क्या है, लेकिन आपने उसको सुना क्या, एब्डोमेन, लेकिन उसको अंडरस्टैंड क्या किया ना, ये स्टोमक है। मैंने कहा स्टोमक बोला आपको भाई, तो इसीलिए क्या करेंगे ना आप, आंसर करके आ जाएंगे स्मूथ। लेकिन आंसर क्या है, वेलेंट्री मसल है, स्ट्राइटेड मसल है, स्केलेटल मसल है। एब्डोमेन आपके कंट्रोल में ऊपर नीचे नहीं हो सकता, वॉल्यूंटरी नहीं है क्या, तो इनवॉल्यूंटरी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, सिंपल एंड माइनर एंड कॉमन मिस्टेक। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखो, शांत रहो। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर का एग्जांपल हो जाएगा एपिग्लोटिस एंड पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। So this is all about stratified epithelium.
अभी हम लोग आते हैं नंबर 2, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल हो जाएगा स्ट्रेचेबल। मतलब इलास्टिक होगा एंड ऑल्सो थिनर। मैंने स्ट्रेटिफाइड आपको बोला था थिकर एंड नॉन स्ट्रेचेबल, ये क्या हो गया स्ट्रेचेबल एंड थिनर। सेकेंड पॉइंट, इट इज विदाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन। थर्ड पॉइंट, it is present in ureter, urinary bladder. As because it is restricted to the urinary system of your body, that is why the transitional epithelium is also called as what? Urothelium. As it is restricted to the urinary system of your body, इसीलिए इसको यूरोथेलियम भी बोलते हैं ट्रांजिशनल epithelium. और भी आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि ये रेनल पेल्विस में भी होता है, पेल्विस पार्ट में भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट। समझ में आया? Yes or no? So almost we have finished the epithelial tissue. थोड़ा सा खाली बचा हुआ है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जंक्शन, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे।